हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थीम फर्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता और अभी के चलन में इसको सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी कहा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय की थी, जो कि लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व की। एग्जाम के ओवरव्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इस वीडियो को आप एज अ नोट, एज अ समरी, एज अ ऑडियो बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेट्स प्रोसीड अहेड। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिगिनिंग, जो कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एंड द लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक बात बता देता हूँ, अपने पास आप एनसीईआरटी लेके रखिए कि मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आप टिक मार्क कर देना, अंडरलाइन कर देना, इस हिसाब से हाईलाइट कर देना, सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपके सामने आपको शो हो रही होगी, जिसके आप नोट्स बना सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। द हड़प्पन seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. Made of a stone called steatite, seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. Terms, places, times. The Indus Valley civilization is also called the Harappan culture. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. This civilization is named as Harappan civilization after discovery of its first site with a unique culture that is named as Harappa. Next शुरू करते हैं अपन इसकी एक्सटेंट जो है उसके बारे में। ये 2600 BC से 1900 BC, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट यूपी और महाराष्ट्र के ये जो स्टेट्स हैं इंडिया की कवर करता है। और कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है उसके हिसाब से 2350 BC टू 1750 BC तक डेट किया गया है। और कार्बन डेटिंग क्या प्रोसेस होता है? जो एक इंसान के अंदर C14 और C12 कार्बन होते हैं, वो जब वो लाइफ होता है तब बैलेंस्ड रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो C14 में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और अप्रोक्सीमेट 5568 ईयर्स के बाद C14 में वो प्रोपोर्शनल C12 के आधा हो जाता है। इसी प्रोसेस से अपन पता लगाते हैं जो पुराने फॉसिल्स वगैरह उनकी कार्बन डेटिंग करके उनकी एज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बिगिनिंग्स की तरफ। It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from large-scale burning at some sites, as well as the abandonment of certain settlements. The Harappans ate a wide range of plant and animal products, including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of shelled grains and seeds. Animal bones found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffalo and pig, indicates that these animals were domesticated. Now move ahead to agricultural technologies. Representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen was used for plowing. Moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in Cholistan and at Banawali in Haryana. Archaeologists have also found evidence of a plowed field at Kalibangan in Rajasthan, associated with early Harappan levels. Traces of canals have been found for irrigation at the Harappan site of Shotugai in Afghanistan. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. Besides, water resources found in Dholavira in Gujarat
may have been used to store water for agriculture purposes. अब आपके इधर सामने शो हो रहा है आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में बीपी, बीसी, सीई और स्मॉल सी। बीपी जो है ना वो बिफोर प्रेजेंट, आज से कितना टाइम पहले, इयर्स बैक के लिए होता है। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से लगभग 4600 to 5000 ईयर्स बैक, बीपी। बीसी है वो बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा एज यूज होता है। क्रिश्चियन एरा वो है जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से। सो बिफोर क्रिश्चियन एरा जो है वो अपन हड़प्पन डेट की बात करते हैं 2600 to 1900 बीसी कहते हैं ना। बीसी मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा, वही बीसी। सी जो है वो क्रिश्चियन एरा, जो क्रिश्चियन और कॉमन का जो एरा है जो अभी भी वहीं चल रहा है वो क्रिश्चियन एरा कहलाता है, सीई। ऐसे अभी अपन 2018 2019 सीई में चल रहे हैं। और सी और फिर आगे फुल स्टॉप थोड़ा सा जो लगता है वो होता है अप्रोक्सीमेट, उसको सिंबलाइज करता है सी। क्या भाई अप्रोक्सीमेट 5, 5, 6, 8 ईयर्स में है वो जो कार्बन डेटिंग की जो C14 है वो प्रोपोर्शनली हाफ होती है C12 तो अप्रोक्सीमेट उसमें अपन सी भी लगा सकते हैं। ये है डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होती है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं जो इसकी सबसे जो फर्स्ट और एकदम अच्छी जो टाउन प्लानिंग के साथ फाउंड है मोहनजोदाड़ो, उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है इसका पहले तो आप एक शाब्दिक अर्थ जो होता है मीनिंग वो जान लेते हैं। इसका मतलब है हीप ऑफ कॉर्प्स या फिर मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो इस नाम का मतलब ये है। ओके, मोहनजोदड़ो a planned urban center. The most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Mohenjo-daro is the most well-known site. The first site to be discovered was Harappa. The settlement is divided into two sections. One is smaller but higher, that is citadel, and the other much larger, that is a lower town but lower. The citadel was walled, fortified, which meant that it was physically separated from the lower town. It seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Signs of planning include bricks. Such bricks were used at all Harappan settlements. Laying out drains. One of the most distinctive features of Harappan sites was the carefully planned drainage system. It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them. Domestic architecture. The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. What is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. The main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected to the wall to street drains. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. The citadel. It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. This includes the warehouses, a massive structure of which the lower brick portion remained, while the upper portion probably of wood decayed long ago, and the great bath. The great bath was a large rectangular tank in courtyard surrounded by corridor on all four sides. The uniqueness of the structure was found with several distinctive has led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. Now move on to the social differences, indications of social differences and tracking social differences. Tracking social differences. Burials, artifacts, luxurious, utilitarian. Now, burials. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out space were lined with bricks.
Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. Jewelry has been found in burials of both men and women. In some instances, the dead were buried with copper mirrors. Some burials found buried with clay articles, whereas some with copper, bronze metals and imported items. Looking for luxuries. Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. The first category includes objects of daily use, made fairly easy out of ordinary materials such as stone or clay, and are usually found distributed throughout settlements. Little pots of faience were considered precious because they were difficult to make. The situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use, such as spindle whorls made of rare materials such as faience. Now we move on to these craft production made of faience and so on, beads वगैरह. ये जो है ना क्राफ्ट प्रोडक्शन के टॉपिक पे चलते हैं कि उनकी प्रोसेस क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती थी, कहाँ से मिलता था, सोर्स क्या थे, वो सब. लेट्स मूव. Finding out about craft production. Chahudaro. This is a tiny settlement as compared to Mohenjo-daro, almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making. Nageshwar and Balakot. These were specialized centers for making shell objects, including bangles and ladles. Identifying centers of production में तो बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया, चहुडरो हो गया और लोथल हो गया, ढोलावीरा हो गया. इन सब की जो लोकेशन है, इन सबको मैप पे लोकेट करने की जो थोड़ी सी टेक्निक्स होती है वो आपको नेक्स्ट जो लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बताई जाएगी उसमें साथ में मैप पर भी दिखाया जाएगा प्रैक्टिस के साथ. तो उसमें ये सब चीजें जो है, ये सब साइट्स इजीली लोकेट करना सिखाया जाएंगे, उस समय बहुत इजी हो जाएगा. नाउ मूव ऑन टू द ट्रेड इंडिकेशंस और स्ट्रेचिंग फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स. इन सब के जो एविडेंस मिले हैं उसमें मूव करते हैं. जो स्ट्रेटजीज है मटेरियल्स को बनाने की वो तो आपके सामने लिखी होगी टेक्निक्स के रूप में. मोल्डिंग, सिंपल आर्ट, शेपिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, इस तरह से तो आप उसके नोट बना सकते हैं. अब नेक्स्ट अपन ट्रेड की तरफ चलते हैं. Strategies for procuring materials. As is obvious, a variety of materials were used for craft production. While some such clay were locally available, many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. Contact with distant lands. A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani sites. Such thick coatings prevent the percolation of liquids. We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappans exchanged the content of these vessels from Omani copper. जो डिफरेंट नेम सजेस्ट किए गए हैं, ये मेसोपोटामिया है, वहां से एक मेलुहा मिला है जो हड़प्पा को इंडिकेट करता है, और ओमान को मगन के नाम से, बहारीन को दिलमून और पीकॉक को हजबर्ड के नाम से अलग अलग नाम से जो लोकेट इंडिकेट किए गए हैं. इससे पता चलता है कि ट्रेड जो थी वो प्रोमिनेंट थी उस टाइम में. इसका एक मैप भी है आपकी बुक में तो आप देख सकते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे जो है वो स्क्रिप्ट, सील, वेट्स, इन सब की जो इंपॉर्टेंस है उस पर चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स. An enigmatic script. The variety of objects on which writing has been found
seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry and bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. About the script. Now, ancient authority. There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. A large building found at Mohenjo-daro was labelled as a palace. A stone statue was labelled and continues to be known as the Christ King. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its Christ kings and have found parallels in the Indus region. और स्क्रिप्ट वेट्स और एक इंडिकेशन जो इस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंगल स्टेट के रूप में शो करता है, उसके जो एविडेंसेस है या जो भी सजेशंस है सोचा गया है वो सब आपके सामने है। वो इम्पोर्टेंट लिखा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट है वो बता दिया गया है। Thank you for watching this video. See you soon with the topic Later Harappan Civilization and its map work.